Hey guys, केम छो? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो माय नेम इज दिव्या और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सो वी ऑल नो कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी है और इतनी धूप, गर्मी और पसीने के साथ साथ मेकअप कैरी करना इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरी गर्ल्स। सो यू डोंट हैव टू डू फुल फेस ऑफ हैवी मेकअप लुक। इससे क्या, अगर आपके चेहरे पर ज़्यादा प्रोडक्ट्स होगी तो उससे आपका फेस जो है पसीने के साथ साथ वो बहुत ही केकी लगने लगता है। और अगर आपका चेहरा कहीं भी टच होता है तो वो प्रोडक्ट जो है बहुत ही जल्दी से ट्रांसफर हो जाती है और वो बहुत ही गंदा लगता है। सो यू कैन यूज अ मिनिमल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट्स एंड क्रिएट अ वेरी लाइट एंड सटल मेकअप लुक फॉर समर सीजन। सो इस पे ज़्यादा बातचीत करके टाइम वेस्ट नहीं करते और जल्दी से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। So first I'm using Neutrogena Ultra Sheer Sunblock. It's SPF 50 plus and personally I like to use a sunscreen underneath my makeup in summer season. Then I'm using moisturizer, and even in summer you have to use moisturizer before makeup. And if you are oily skin girl, then you can use any lightweight moisturizer, but don't skip this step. Then I'm using Nykaa Prep Me Up Face Primer for cover my pores. After that, I am using Maybelline Fit Me Concealer. And you can see that I am using a little bit amount of concealer. Then I am using PAC Beauty Blender for blending products. For foundation, I am using Nykaa Skin Shield foundation, and again I am using a tiny amount of products. Then I am using Maybelline Fit Me Loose Powder for set my under eye, and this is the most important step. Set your under eye. अगर आप ये स्टेप नहीं करोगे तो आपकी आंखों के नीचे जो क्रीज होती है वो बहुत ही जल्दी दिखने लगती है. For blush, I am using Benefit का Benetint blush,
एंड दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्लश। और ये अगर आप बिना कोई फाउंडेशन और बिना कोई बेस के आप डायरेक्ट अपने फेस पे लगाते हो तो भी ये बहुत ही ज़्यादा प्रिटी दिखता है। After that, don't forget to set your entire face with loose powder. Then I'm using eyebrow pencil for filling my eyebrows. For eyeshadow, I am using a Makeup Revolution eyeshadow palette, and if you don't want to do eyeshadow, then you can totally skip this step. It's all up to you. But my eyes are so tiny, so that's why I'm using eyeshadow for a little bit enhancing. Then I'm using Benefit का Bad Girl Bang Mascara. For lipstick, I am using Huda Beauty liquid lipstick in the shade Venus. On top of that, I am using again Huda Beauty liquid lipstick in the shade Wi-Fi. And
this is the final look. I hope you like it. सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, एंड आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप समर में कौन सी प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पे यूज़ करते हो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और दैट्स इट, बाय।